अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ रेडियस ऑफ द अर्थ सडनली डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, देन चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड बी। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यदि अर्थ इंटरनल फोर्सेस की वजह से अपनी रेडियस को हाफ कर लेती है, उसकी रेडियस हाफ हो जाती है, जो आज की डेट में रेडियस है उस रेडियस का हाफ हो जाती है, तो ड्यूरेशन ऑफ डे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एट प्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ डे इज 24 आवर्स, तो रेडियस के हाफ होने पर डे के ड्यूरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपने देखना। दिस इज द अर्थ, you know that earth is rotating about an axis passing through north and south poles with some angular velocity omega in the direction from west to east, and its time period of rotation at present is 24 hours. Time period of rotation means the time in which the earth completes one rotation, and this is T1 is equal to 24 hours, and at present its radius is 6400 kilometer. You know that angular velocity of a body rotating about some axis is given by delta theta over delta t, where delta theta is the angular displacement and delta t is the time interval, and the instantaneous angular velocity at some instant t is given by omega is equal to d theta over dt. The earth completes one rotation in nearly 24 hours, means it completes 2 pi radian, angular displacement of 2 pi radian or 360 degree in nearly 24 hours. So its angular velocity at present is 2 pi over t1 radian per second. Omega 1 is equal to 2 pi over t1. This is the angular velocity of the earth at present. Now its radius due to internal forces reduces to half of its present value, means r2 is equal to r1 by 2, and its angular velocity becomes omega 2, that is omega 2 is equal to 2 pi over t2, where t2 is the time period of rotation after the decrease in its radius. Okay, so t2 is the duration of day after the radius of the earth reduces to half of its present value. The torque acting on a rotating rigid body is given by rate of change of its angular momentum. Tau is equal to dl over dt, where L is its angular momentum at some instant. If external torque on the rotating rigid body is zero, then dl over dt is equal to 0. Rate of change of angular momentum is 0 if external torque on a rotating rigid body is 0. अब रेट ऑफ चेंज मतलब एल में कोई चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज 0 है, इसका मतलब एल में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं है, एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है,
दो पॉसिबिलिटीज है इसकी, या तो एल जीरो हो या एल कांस्टेंट हो टाइम के साथ, लेकिन एल जीरो नहीं हो सकता बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग, सो एल इज कांस्टेंट, एल कांस्टेंट। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी is 0, then angular momentum of the rotating rigid body remains constant with time. So L is equal to constant. अब एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा। I क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द rotating rigid body about the axis of rotation, axis of rotation. This is moment of inertia and omega is the angular velocity. I into omega is constant. अर्थ इज स्फेरिकल मान लेते हैं, वैसे तो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 m/r²। m इसका मास और ओमेगा 2π/t, ये कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट। तो m इज कांस्टेंट, बाकी नंबर्स हैं, तो इससे क्या हुआ r²/t इज इक्वल टू कांस्टेंट, और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², और T2/T1 इज इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर। R2/R1 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि R2/R1 इज 1/2, तो ये हो गया, और T2/T1 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 और इसका स्क्वायर है तो 1/4, इट मीन्स T2 इज इक्वल टू T1/4। T1 is 24 hours, T1 is 24 hours, T2 is equal to 24/4 hours is equal to 6 hours, 6 hours. If the radius of the earth reduces to half of its present value, duration of day will reduce to 6 hours. Okay, so the time period of rotation would decrease to 6 hours. So change in the duration of day, change in the duration of day कितना हुआ? T1 minus T2 is equal to 24 minus 6 is equal to 18 hours, 18 hours, और ये चेंज डिक्रीज, दिस इज द डिक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे, दिस इज डिक्रीज। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 18 आवर्स, 2, आंसर ऑप्शन 2, 18 आवर्स। द ड्यूरेशन ऑफ डे विल डिक्रीज टू 6 आवर्स, मीन्स विल डिक्रीज बाय 18 आवर्स। ओके, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, please subscribe my channel. I will be very thankful to you if you subscribe my channel. Thank you.